scores of them. ये नहीं है कि इनकी संख्या बहुत कम है, करोड़ों में है. Oh dear, this is like terrible. And right now we have got Mr. Nandakumar Pawar with us, our old friend. Nandakumar Pawar sahab. नमस्कार सर, नमस्कार. How are you sir? How are you? I am good sir, Ajul. आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर. ओम श्री गणेशाय नमः. कैसे हैं सर? मस्त सर, मस्त चल रहा है. क्या बात है सर. सर बताएं, JNPT. Yes. They are up to their old tricks again, is it? Yes. And what have they done now, sir? Could you tell our viewers? अब क्या किया JNPT ने? No, basically this fight has been going on from last 33 years, 38 years rather, from 1984. The entire Shevagaon was displaced by JNPT. The land was supposed to be used for development of JNPT for second phase. And in last 30 years, the village was shifted and kept in transit camp. Yes. Area called Hanuman Kolivada. Yes. They are boxed only into 91 guntas of land. And we just keep writing, keep repeating our prayers to various judicial level, the government level, but there's no justice has been delivered yet. The matter of fact, when the Shiva village was took over by JNPT in 1984, the JNPT thought this is very important national project, rather a project in national interest, JNPT project. So there should be proper rehabilitation should take place. So accordingly, these are the new facts which I am sharing with you. In earlier debate, we were not focused on this point. So JNPT in 1984 purchased a piece of land that is 17 hectares at Bori Pakhadi area. The land supposed to be given for the compensation, rehabilitation for the displaced Sheva village, but they are boxed only into 2 hectares. And today the situation is such, in 2023, out of 17 hectares, the 15 hectares of land has been taken over by the state mangrove cell because of the inundation of mangroves on the Bori area. Yes. When the land was purchased in 1984, only 68 lakhs rupees were spent for reclamation that land to make the basic setup. Although it was needed almost 1 crore 25 lakhs to clear entire patch of 17 hectares of land. Instead, they focused only on 2 hectares of land, and today the situation is that the 15 hectares of land, they have to hand it over to the mangrove cell because the area was inundated by the mangroves. For the obvious reason, the entire area is ecological sensitive area, low-lying area, and intertidal fishing zone. And for your kind information, sir, the collector was appointed to resettle this process within 3 months. The deadline is over. Still situation is unchanged. And we are forcefully doing all this process. So all these fisher folk are still living in a transit camp? Exactly, sir. You know, Nandakumar ji, the latest thing that we got, the State Environment Department has issued notice to JNPT about the plastic that they are, disposing of in the seas, and especially destroying the mangroves of Uran Taluka. The plastic waste in the sea along with the dredging waste, that is after you all complained continuously to government agencies, government authorities, they seem to have asked the JNPT ki how this plastic waste is going along with the dredging waste into the seas 12 kilometers inside, and huge. They say around 20 tons of plastic are being dumped every day into the sea, and then it comes back and destroys all the mangroves. Now there's a very, very serious thing. Sea ke andar plastic waste is prakar se dispose karna, that through by JNPT. You have been fighting this continuously. Do you think the government is slightly serious now where it has issued notice to JNPT? Very sad to say, nobody is serious about anything.
There is a continued degradation of environment is happening. There is human rights violations are happening all over the Uran Taluka. Last week you might have heard about the story that oil spillage was taken place in Uran Taluka from ONGC pipeline. The crude oil drained from the farmland through the Nala deposited into the sea. The area was completely contaminated because of the deposition of this chemical crude oil. And the area was contaminated, was very rich fishing area, especially for the crustaceans. So the entire terrain is a rocky terrain. It's a home for so many varieties of crustaceans like crabs, eel, lobsters, Prawns. and prawns. And all this area has been destroyed. And people are agitating against that. And very sadly, the ONGC is not ready to accept their fault. They are still maintaining this oil spillage won't cause any damage to the marine life or damage to the fishing community. Wow. But that is not the case. Isn't that The lovely? people are agitating. वो धरने पे बैठे हैं, and I'm going to visit those places on this Sunday, on this Friday, to associate it with them and take up their issue with different judicial level, because this is not acceptable. Nandakumar ji, if you are talking about 50,000 tons, if we are talking about 50,000 tons of plastic that is stuck in cities' mangroves, now we are looking toward ecological disaster. 50,000 ton is stuck in the city's mangroves. If this is what you and all the environmentalists have been continuously highlighting, the government has to act. But what are the volume that we are talking about? 50,000 tons of plastic is stuck in the mangroves. You're waiting for a disaster to happen. Now continuously we are seeing problems everywhere. Today we have seen flooding in Nagpur. It has never happened. Entire Nagpur is under floods. पूरे पानी भर गया है सब जगह. And nobody has any solution for all these kind of things. What is the solution for sir? So see, there are many new laws are coming to the force, but as far as implementation is concerned, there's hardly any implementation. You see, many times I have shared some videos of the Bhandup open drain nalas, the amount of garbage, non-biodegradable garbage which keep draining into the creek area. There is no absolute control. The MPCB, the MCGM supposed to act on that, but they didn't bother about. And we as a local citizen, we keep clearing all those trash which is harmful to the marine life and the fishing community, because whatever trash, whatever plastic we release in the creek is getting deposited into the mangrove area. And I don't think so if there is any assessment has been done as to assess the tons of plastic which has been deposited in the mangrove area. Nobody has any idea. Because what we see on the ground, the area may not be accessible to the ordinary people, ordinary or government officials to go and check the extent of damage has been done because of the deposition of plastic into the mangrove area in the spawning and breeding ground of the fish. Nobody can know. So the audit has never taken place of plastic Yes. deposition in the mangroves, in the mangrove Yes. areas or along Yes. the coastal zone. Yes. These people say that they do a If regular audit and stuff. anybody dares, people from MCGM or the MPCB, Yes. they should come along with me. I will show them the status of mangroves because of the deposition of plastic into the mangrove area. Unbelievable, out of imagination. Huge. Nandakumar Pawar Sahab, the state government says that they have asked SIDCO, I think SIDCO is the agency in Navi Mumbai and all these areas, and SIDCO was asked to send teams, and the state government says that SIDCO sent 6 teams to various areas and various locations, probably to 6 locations, and especially they're talking about the dredging waste of JNPT. Nearly 1 lakh cubic meter of dredging waste, and along with that plastic waste. Now the government says the government's policy is to eliminate plastics totally, because plastics, the government has made a war on plastic. That's what the government claims. Now, कितना सच्चाई है नंदकुमार पवार साहब इसमें?
सरकार कह रहा है कि वी आर डिटरमाइंड टू एलिमिनेट प्लास्टिक वेस्ट एंड योर एंटायर मैंग्रोव्स आर फिल्ड विद प्लास्टिक वेस्ट. नाउ हाउ, वेयर इज द सॉल्यूशन पवार साहब? सर अभी मैंने लास्ट वीक एक वीडियो पोस्ट किया था उरण का, द्रोणागिरी नोड का, जहाँ पे आप देख सकते हो कि टन्स ऑफ प्लास्टिक लाइंग ऑन द रोड इनटू द मैंग्रोव एरिया. और ये नज़ारा उरण के हर कोने में, हर नुक्कड़ पे आपको मिलेगा, क्योंकि मैंग्रोव है, मैंग्रोव एंड वेटलैंड है. वी कंसिडर मैंग्रोव एंड वेटलैंड एज द वेस्टलैंड, वेस्ट एनी थिंग इनटू द मैंग्रोव एरिया, नोबडी बॉदर्स. ये सिर्फ बोलने की बातें है कि हमने ये कानून लाया, वो कानून लाया, लेकिन उसका पालन कहाँ पर होता है? लेकिन आजकल तो कानून भी हटा रहे हैं ना सर. CRZ 1 कहाँ लागू हो रहा है आजकल? CRZ 2 कहाँ लागू हो रहा है? They are changing it all. We are seeing it right here, right next to our office is the Mithi River. Rightfully speaking, it's a riverine area. The river has a water catchment area where there is supposed to be no development. Here, we've got buildings right inside the river. I mean, और तो और छोड़िए, तो कहाँ से कुछ होगा? What are we looking at? And each time anything floods, by the way, anything floods, an area just drowns. People look at it as an opportunity. कि यहाँ पर कुछ और पैसा बनेगा अपना. इसको जब क्लीन करना पड़ेगा, यहाँ पर नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी. We will earn thousands of crores more. Each environmental disaster is actually an opportunity for these unscrupulous people. Mr. Nandakumar Pawar, how do we stop it? Exactly, that is this single motive on which everybody works very seriously. ये टुकड़ा यहाँ पे बिल्डिंग खड़े करो, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, आपको अथॉरिटी सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसमें पैसा बनता है जी. लेकिन एनवायरमेंट का जो डैमेज हो रहा है उसके बारे में क्या? अभी नाउ वी आर इनटू द 75th इंडिपेंडेंस डे. अमृत साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. अभी हमारे पीएम साहब तो ही कीप्स लॉन्चिंग एंड अनाउंसिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. दैट्स ऑल राइट, बट रिसेंटली ही हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट कॉल्ड अमृत सरोवर. Yes. Okay, we are very thankful for that. But what is its practical implication on the ground? Wetlands को हम अमृत सरोवर बोल रहे हैं, लेकिन उसकी स्थिति क्या है? अभी नेशन वाइड, as per the National Wetland Atlas, they have identified 757 water bodies countrywide. Yes. Okay. And in Maharashtra alone, there are 2 lakh water bodies have been identified. But let me tell you, how many water bodies out of 7 lakh plus have been identified and notified? Only 1,225 water bodies. And we have Supreme Court verdict in 2017. They have categorically said that any water bodies comprises of 2.2 hectares or more supposed to be protected by their order. And there are about 2 lakhs such water bodies that exist. But how many of them have been notified and protected? Only 1,225. But Nandakumar Pawar साहब, don't you think that is also, because that's a question I've been wanting to ask you for some time. मैं चाहूँगा इसका जवाब अगर आप हिंदी और मराठी में भी दें तो बड़ा अच्छा रहेगा, लोगों को समझ में आएगा. क्या है कि हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जितने भी अफसरशाह हैं, ज़्यादातर किसी को जो एनवायरनमेंट की चीज़ होती है, पर्यावरण की चीज़ होती है, उसकी अहमियत क्या है वो ज़्यादातर समझ में आती नहीं. तो आपको लगता नहीं है कि जहां तक पर्यावरण का सवाल है, एनवायरनमेंट का सवाल है, लोगों के जहन में ये बात बिठाना बहुत जरूरी हो गया है कि भाई ये दिस इज नॉट जस्ट एन एनवायरनमेंट इशू, ये सिर्फ पर्यावरण का इशू नहीं है, ये आपकी जिंदगी का इशू है, ये आपके जीवन का इशू है. आप मरेंगे. ये जिस दिन आपकी जितनी भी, जो आप वाटर बॉडीज बोलते हैं, जितने भी जलाशय आपके, जितने भी जिनको जलाशय कहते हैं हम लोग, वो जिस दिन जहरीले हो गए, क्या पानी पिएंगे आप? कैसे रहेंगे? अरे पूरी धरती को क्या आप बिल्कुल मतलब एक जहरीली पर्यावरण में आप उसको तब्दील कर देंगे? सर जरा बताएं प्लीज. एग्जैक्टली, ये काफी अहम सवाल है आपने जो उठाया, क्योंकि अभी पर्यावरण तो एक जगह में रह गया.
आता पर्यावरणाला बाजूला ठेवा, आपल्याला स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न करा. कारण आता आपण सध्या अशा स्टेजला आलेलो आहोत की पर्यावरण बाजूला राहिलं, स्वतः आपण कसे जगू शकतो याचा विचार करा. फक्त जिवंत कसे राहू शकतो हे बघा. कारण आज जी परिस्थिती उद्भवलेली आहे, आज आपलं टेम्परेचर 45 डिग्रीच्या वर गेलेलं आहे. हे कशामुळे गेलेलं आहे याचा शोधबोध घेण्याची गरज आहे. आणि हे दायित्व, हे काम खरं म्हणजे सरकारने केलं पाहिजे की अशा परिस्थितीमध्ये आहे काय करण्याची गरज आहे. ही जी वेटलँड्स आहेत, जे नॅचरल एरिया आहेत, त्याचं आयडेंटिफिकेशन केलं पाहिजे ताबडतोब आणि त्याला संरक्षण दिलं पाहिजे. आणि वेटलँड यासाठी महत्वाची आहेत का ग्राउंड वॉटर रिचार्ज असेल किंवा वॉटर होल्डिंग, नॅचरल वॉटर होल्डिंग एरिया असेल, प्रदूषण कंट्रोल एरिया असेल, हीट स्टोकिंग एरिया असेल, हे सर्व कामं वेटलँड करतायत. वेटलँड ह्या अनेक पक्ष्यांचा अधिवास असतो, अनेक जलचरांचं आश्रयस्थान असतं, जिथे मच्छीमार समाज आरामात जगू शकतो मासे पकडून. अनेक पाण पक्षी, स्थलांतरित पक्ष्यांचा अधिवास असतो आणि तो आपण डिस्ट्रॉय करतो. म्हणजे आपण एक प्रकारे आपल्याच पायावर झोंडा मारतो असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये आणि याची जाणीव सरकारला होऊ नये. हे आश्चर्य वाटतं मला. पर्यावरण बाजूला ठेवा तुम्ही. आज आपण जगू शकतो का? आपण रात्री एसी लावल्याशिवाय झोपू शकतो का? आणि एसी हे काय सोल्युशन असू शकत नाही. मग सरकार याच्यावर काय करते? विकास करायचा, अजून किती विकास करायचा, अजून किती टॉवर बांधायचे? प्रत्येक जागा जी दिसते ते तुम्ही 4 माळ्याच्या बिल्डिंगला रिडेव्हलपच्या नावाखाली 15-15, 22 माळ्याच्या टॉवरला परवानगी देता. आणि त्याच्या अनुषंगाने जे इश्यूज होतात, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट असेल, इलेक्ट्रिसिटी असेल, ड्रिंकिंग वॉटर असेल, पोर्टेबल वॉटर असेल, हा पाणी आणि सर्व व्यवस्था तुम्ही करणार कुठे आहेत? कारण नॅचरल रिसोर्सेसला लिमिटेशन आहे ना, कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो है हर एक चीज. दुरुस्त बात है सर, दुरुस्त बात. और यहाँ कहने का मतलब ये हुआ नंद कुमार पवार साहब, जो आपने बात कही है बड़ी अहम बात कही है. अरे भैया, बाहर 55 डिग्री का टेम्परेचर हो गया है, आप अंदर अपने घर के अंदर बैठ करके एसी तो चला लोगे क्या? एसी को साथ में लेके जाओगे? नंबर 1. नंबर 2, उस एसी की वजह से और भी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका क्या? सीधी बात है सर. आज फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ी आप इस्तेमाल करिए, ठीक है साहब, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करिए. अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल आप तभी इस्तेमाल कर पाओगे अगर आप उतनी बिजली का उत्पाद करोगे. उतनी बिजली का जब उत्पाद करोगे, यू विल हैव टू प्रोड्यूस दैट मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाउ? Because at the moment we are usually using coal. Most of our plants are coal based plants. तो फिर आप क्या करेंगे? आखिर में आप एक समस्या का समाधान निकालने के लिए 20 समस्याएं और निकाल रहे हैं. तो लोगों को सर जब तक ये समझ में नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ खास होगा. आपको लगता नहीं कि सर आप टैक्टिक चेंज करना चाहिए? जो अभी आपने बताया फॉर एग्जांपल मराठी में, वो हर एक तक पहुंचना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक नंद कुमार पवार साहब? सर, हम तो हर संभव कोशिश करते रहते, अलग अलग मतलब प्रोग्राम के द्वारा लोगों को जागरूक करना. हम लोग के बात पल्ले पड़ती है, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स है, जो डिसीजन मेकर्स है, ये बात उनके पल्ले पड़नी चाहिए. क्योंकि इनके सब बातों से इसका आभास होता है कि हम विनाश की तरफ बहुत तेजी से सफर कर रहे हैं. विनाश अटल है, क्योंकि कोई रुकने वाला नहीं, ऐसा मुझे लगता है. So Pradeep ji, in effect, the bureaucrats will wake up to what is really happening when they themselves get affected. I think that's what is going to happen. यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पवार साहब, प्राइम मिनिस्टर G20 में भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, जिस प्रकार से हम छोटे छोटे चीज करके पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, एमिशंस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हर व्यक्ति अपने घर के अंदर क्या क्या करके इस पूरे अर्थ को किस प्रकार से आप बचा सकते हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स को कैसे बचा सकते. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरा एक विजन आपके सामने रखा है, पूरे देश के सामने रखा है कि वी हैव टू मूव अहेड एंड इंडिया विल लीड द वे. उनका कहना था कि इंडिया विल शो द वे हाउ टू मैनेज कार्बन फुटप्रिंट्स, क्लाइमेट चेंज और अलग अलग. तो ये क्या चल रहा है? मीन्स एक विजन है, प्राइम मिनिस्टर का विजन है. यहां पर देव फडणवीस जी बोलते कि हमको सब रिवर्स को बचाना है, ये करना है वो, बट ऑन ग्राउंड एक दूसरा ही एकदम सिस्टमैटिक. ऑन ग्राउंड जो जर्मन एनजीओ, एक एनजीओ ने रिसर्च किया कि बोलते कि मुंबई, केरला, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इनके बगल में जितने समुद्र का किनारे हैं
बोलते the most polluted in the world and most polluted because of plastic pollution, plastic accumulation. तो नंद कुमार साहब, आप तो लगातार आप वो आदमी है कि आप खुद ग्लव्स पहन के मैनग्रोव्स में घुस के पूरे प्लास्टिक निकाल रहे हो वहां पर। आपने खुद एक माहौल ऐसा बना दिया है कि एवरीबडी शुड बी कॉन्शियस। तो क्या दिख रहा है आपको? सरकार तो कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर विजन, पूरे दुनिया को विजन दे रहे हैं, बट ऑन ग्राउंड आप खुद उतरे हैं मैदान में प्लास्टिक निकालने के लिए। कैसे देखते हो नंद कुमार जी? सर, पीएम का विजन तो काफी अच्छे प्रोजेक्ट को अनाउंस करते हैं, लेकिन हर बार इस बार भी मैं यही कहूंगा कि उसका पालन कहाँ पे होता है। आपने G20 का अभी जिक्र किया, तो G20 जो दिल्ली में हुआ प्रगति मैदान में, वहीं पे हमारा V20 इवेंट हुआ था 19-20 अगस्त को। तो वहाँ पे हम कम से कम 750 लोग ऑल ओवर द कंट्री, स्पेशली द फार्मर्स, द इम्पैक्टेड कम्युनिटीज बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट, सब आए थे। तो यही बताने के लिए कि जो अभी G20 हो रहा है वो बेसिकली क्यों हो रहा है। वी आर लीडिंग द वर्ल्ड, नो डाउट, वेरी प्लेजेंट थिंग एंड रियली वी फील प्राउड अबाउट दैट, बट व्हाट इज द ग्राउंड सिचुएशन? बराबर है। The main motto, main intention of that G20 summit is to invite international funding here. Okay, the funding agencies like World Bank, ADB, WTO, they keep funding to the corporate world, and they are prospering. What about the stakeholders? Here, for example, the URAN, the Jnpt port, which are funded by the ADB and JICA, yes, with exchange of rupees 131 million US dollar for the development of Terminal 4. And there are certain criteria to be fulfilled before sanctioning funds. Like there should not be any degradation of environment, there should not be violation of human rights. What is happening on the ground? Is a complete violation. Complete violation. Is a complete violation of every condition which has been put by both the Asian Development Bank and even the World Bank. Absolutely true. And so thankfully we have written to them. Yes. We have written to JICA and World Bank, ADB. I have written 33 pages document, application with the document, the number of violations, the series of violations committed by the Jnpt right from 1984 till date. And thankfully they have responded positively. But sir, for 40 years, these fisher folk have been in a transit camp. Isn't that awful? I mean, what kind of a country are we living in? This Sheva village was acquired in 1984, and these people still haven't got their homes back. What is going on? Mr. Pawar, do you think they will get their homes back ever? We will get, because we are fighting. We are fighting on all fronts. And we respect you for that. We really and truly respect you, and we are proud of you for that. Thank you, sir. And when do you think that will happen, sir? When do you think that will happen? Justice will be delivered soon. As soon as next 40 years or next 4 months? On the ground fighting for it. Yeah. Let's be optimistic. Don't get nervous and disappointed. We'll keep fighting, and success will be ours. Wonderful. Mr. Nandakumar Pawar, always a pleasure talking to you, sir. And I hope your message, in whatever small way that we can help, reaches as many people as possible. This is our world. We are trying to protect our world. People should understand that. लोगों को ये समझ में आनी चाहिए कि ये पर्यावरण कोई एक्सोटिक चीज़ नहीं है जो यूनिवर्सिटी पेपर्स वगैरह में डिस्कस होती है, जो नंद कुमार पवार जैसे लोग जो हैं वो इसके पीछे पागलों की तरह पड़े हुए हैं। अरे भाई, ये आपकी जिंदगी का सवाल है, आपका जीवन है, क्या कर रहे हैं आप? But a happy thing about it is, sir, the government has started responding to Pawar Sahab, Nand Kumar Pawar Sahab, और जो environmentalists झगड़ रहे हैं. The government understands its responsibility. The way the environment department is responding, saying that we acknowledge we have to eliminate plastic. Yes. We need to save the mangroves. Will not allow pollution into the sea. I mean, बोल तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं. Inspection team भेज रहे हैं आपके कहने पर. Let's hope it really works this time. Let's hope it really works. नंद कुमार पवार साहब, नमस्कार. गणपति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं.
Thank you so much, sir. Thank you very much for joining Thank us. you, thank you, Pleasure, sir. as Thank you, always. thank you, Bajaj sir. Thank you, Nambia sir. Thank you for one more opportunity. Thank you, Great. Absolutely great having you, sir. thanks, sir. Well, each time he comes along, he doesn't have too much of good news, but There was a But good it's news. So the necessary. Environment Department of the state has responded. In fact, they have sent inspection teams, asked report from CIDCO. I believe even the PMO has responded. The Prime Minister's office has also responded to exactly Yes. what you're talking about. Bilkul. They want a report. They say that how can you do this? How can you, dump so many tons of plastic? This is what B&K just sent to me. 50,000. Yeah, so many tons of Tons. plastic in mangroves. Yes, sir. And what is more, the audit which should have been conducted of plastic in the mangroves has still not been conducted. So the Prime Minister's office wants to know why. And I think this time they're serious. You're right, Pradeep ji. This time they're really serious. Right, let's read a few comments before we go. In the meantime, please do subscribe to the channel. आप सब channel को subscribe करें और जितने भी आप अपने comments भेज सकते हैं ज़रूर भेजें. Let's take a look at some of the comments which have come. Can we take a look, please? Took them 9 years to decide. ये हैं शीला जोशी 6639. Well, at least they took, even if it is 9 years. भाई देर है, दुरुस्त है, बीता हुआ वक्त कोई वापस तो ला नहीं सकता प्रदीप जी. अब क्या करें? राज ठाकरे to be best CM. DK कालरा साहब 1122 लिखते हैं. I strongly agree. Well, I agree with you too. That's only art works for slum dwellers. That's what Mr. Sundar Patmukh says. Very nice, sir. Deepak Hegde साहब लिखते हैं. This is our friend Nizam, right? Mamjan Mohammad Sajid उन्होंने लिखा है. And there was one other comment, but anyway, these are the only comments that we've got today. There was one other comment which I read, by the way, which was about Arvind Kejriwal, where I think somebody said that he'll be, Baperkar Saab said that he'll be the best PM that we have and so on, and somebody has written he'll probably be the Prime Minister of Pakistan or something to that effect. There's a vacancy there actually. Yes, there is. There is a vacancy there. There's a transit PM. But that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. गणेश उत्सव अभी भी जारी है. आप सब लोगों को बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं गणेश उत्सव की. आज राधाष्टमी भी है, राधा जी का जन्म भी है, तो राधे राधे. ओम श्री गणेशाय नमः. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.